Assalamualaikum, my name is Warda, roll number 23, and today my topic is geocoding. First, I'm going to look at what geocoding is, and then I'm going to discuss its exercises one by one. Geocoding basically is a process of taking a text-based description of location, like its location might be a address or some place. So geographical coordinate corresponding to a location represents geocoding. ये प्रोसेस होता है जिसके अकॉर्डिंग हम टेक्स्ट बेस्ड जो डिस्क्रिप्शन होती है किसी लोकेशन की वो एक्वायर करते हैं, फिर उसको रिलेट करते हैं जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स के साथ. So it is a process of taking a text-based description of a location such as an address or the name of place and returning geographic coordinates. तो इसकी बेसिकली जो है वो 5 एक्सरसाइजेस हैं. फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो रिलाई करती है ऑन क्रिएटिंग और जनरेटिंग एड्रेस लोकेटर, एंड सेकंड एक्सरसाइज इज creating composite address locator, and third is finding addresses. Fourth one is geocoding addresses in a table matching unmatching addresses. यानी कि हम लोग फोर्थ एक्सरसाइज में जो है वो देखेंगे कि कौन कौन से एड्रेसेस जो है वो मैच हुए हैं, कौन कौन से जो है वो अनमैच्ड है. एंड फिफ्थ एक्सरसाइज इज यूजिंग अल्टरनेट नेम एंड प्लेस नेम अलियासेस. अब वन बाय वन इन जो है एक्सरसाइजेस को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन जो है वो creating an address locator. So I'm going to share my screen with you. Here is the reference presentation related to geocoding tutorial or geocoding. First exercise जो है creating an address locator. एड्रेस लोकेटर क्रिएट करने के लिए फॉलोइंग स्टेप्स हैं जो कि मैं वन बाय वन परफॉर्म करती हूँ ArcGIS ओपन करके. फर्स्ट वन जो है वो ArcGIS ओपन कैसे करना है और डाटा कैसे करना है उसमें जो हमारा रेफरेंस डाटा है वो यहाँ पे जो है ये ओपन अ फाइल का जो फोल्डर है उसमें मैं क्लिक कर रही हूँ, एंड देन आई एम नेविगेटिंग टुवर्ड्स the folder where I have placed the MXD of Geocoding. अभी इस MXD को ओपन करना है. It will take some time. तो यहाँ पे जो है इस डाटा में यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है कि डाटा किसमें कंप्राइज कर रहा है. स्ट्रीट का डाटा है, उसके अंदर ये डिफरेंट नेम्स हैं, आर्टिस्ट हैं, कस्टमर्स हैं और प्लेस अलियासेस हैं. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एड्रेस लोकेटर जनरेट करने के लिए फॉलोइंग स्टेप्स हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं कि वो कौन से हैं. फर्स्ट सेकंड स्टेप क्या है, वो हम लोगों ने कैटलॉग की जो विंडो है उस पर राइट क्लिक करना है उस फोल्डर पे जहाँ पे हमारा ये डाटा लिस्ट है. तो आई एम selecting this folder and then new and then address locator. Okay, this dialog box will appear.
अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, ये जो फाइल फोल्डर ऑप्शन बनी हुई है। Now I have to click the US address dual radius and then OK. In this reference data, I have to select the streets option, then on this primary table. Now I have to specify the output location of this file and specify its name. So I am going to give it street with address locator, right? And then OK. Address locator has been generated. So these are the steps which I have performed to generate an address locator. Basically, these are total 11 steps. And after 11 steps, a folder of address locator will be generated over here. So this is street address locator. I can also rename it as Atlanta. Atlanta address locator. Okay. So it was the first exercise of geocoding. So my name is Warda and I have completed the first exercise of geocoding by using all the mentioned steps in my reference video. Thank you. Now I'm going to stop sharing my screen.